Hello, what's up? How you doing? Yeah, I was here just 15 minutes ago. You're seeing too much of me, huh? On Tuesdays and Saturdays especially. You're able to hear me clearly and see me as well, right? What's up? Good evening again. Deepanvita, Mudasir, Naruto, Mayuk. What's up? What's up? How you doing? आवाज आ रही है, right? You're able to see me and all of that? Well, what do you guys prefer? I know you don't. Doesn't probably matter. Me on the left or me on the right? I mean, do you care? So I don't know if you noticed. I'm on your left side when I'm doing 12th grade sessions. I'm on the right side when I'm doing 11th grade sessions. So that jaldi jaldi if you're looking through videos, easy for you to recognize these small random things that I do. Khair. Also, behind me, among the small random things I do, is this whole thing. There's this, what do you call it? How do I show it to you? See that there's a YouTube session link. So when I save this, when I send this to you guys on Telegram, when you click on this, you'll be redirected to the session. So that feel free to share the PDF link with as many of your friends as you want from the Telegram group. Yeah, so they benefit from these awesome sessions as well. Cool. Hold on, just figuring out this position business. Is it okay? Am I in frame and all of that? Yeah, okay. All right. There is this thing here. Oh, that's my monitor screen, huh? That's okay. Cool. Just figure. Are yes. Hey, what's up? It's good either way. Lavanya, what's up? How you doing? Hello. There's this thing here that's bugging me. There's a thing you can see, right? Wait. I found it. Okay. Never mind. Yeah, that's the green screen. Yeah, the little things matter. So let's start with DNF block second session. थोड़ा time pass करने के बाद, let's start right away. Can you figure out the density of transition elements? Can you do that? I'm great, Lavanya. As always, I'm at my best self and I'm with you guys over here. Last session में हम लोग ने we looked at DH, enthalpy magnetization, radius, and all of that, right? Those trends were the main thing we studied. Now we're going to look at all these electronic configurations, all the electronic properties. What does that lead to? मैंने बताया था कि D block elements, where the electrons go to, in the D or the S block, decide most of the amazing properties. And we'll further that idea in this, we'll cement that idea right now. Okay? So density of transition elements, how does that work? Because radius कम होता जाता है, तो density भी बढ़ती जाएगी. अगर रेडियस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी घट जाएगी. सो यू नो राइट अवे दैट जिंक इज गोना हैव अ वेरी हाई, वेरी लो डेंसिटी, बिकॉज वेल उसका रेडियस काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू द अदर्स. ठीक है, यू रिमेंबर दिस? या लुक एट दिस. डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम Sc टू Cu एंड देन सडनली घट जाती है व्हेन इट गोज टू जिंक. ओके, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज वेल बिकॉज साइज बढ़ जाता है एंड मास बढ़ जाता है. सॉरी, मास बढ़ जाता है, जैसे बढ़ जाता है. गोपीनाथ, व्हाट्स अप? हाउ यू डूइंग? सादिया, हेलो टू एवरीबॉडी हियर. Sir, I'm great. Sorry if I missed some chat. Okay, cool. Sawal. The pair that has similar atomic radii is... Oh, I know your light की वजह से शायद नहीं, light की वजह से नहीं है. That's bugging me, that thing in the corner. What is that? Khair. Anyway, while I figure that out, try this question. The pair that has similar atomic radii is what? There are 4 things here, right? Manganese and rhenium, titanium and hafnium, scandium and nickel, and molybdenum and tungsten. W क्या है? W कहां से है? Tungsten, remember? Which one do you think? Okay, titanium and hafnium, says Poonam. All right, Gopinath, what do you think of this one? इसका क्या जवाब होगा? Oh, you know what's happening? That's because of the fan, the green screen's going back. That's what's happening. I figured it out. Can I mess with it? Let's see. While you guys give me the answer. Deepanvita saying D. D for Deepanvita, D for the answer. Lavanya is saying D as well. Mayuk D. Jepoline, what's up, G? Jepoline, I think I've seen you before. Gopinath saying B. Sadia saying D. ठीक है. So looks like there's a confusion between titanium, hafnium, molybdenum and tungsten. ले आते हैं हमारी beautiful सी periodic table. देखो, lanthanide contraction. I'm just going to correct. Ln contraction is responsible for 4D and 5D radii to be similar. 4D, ये है 5D. तो ये वाले similar होंगे. मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन मिल गया, यही होगा तुम्हारा आंसर. बाकी क्या है? टाइटेनियम और हाफनियम. नहीं यार, देखो क्वाइट फार अपार्ट. एंड टाइटेनियम, हाफनियम, ये तो फार अपार्ट है. मैंगनीज एंड रीनियम, वेयर इज मैंगनीज एंड रीनियम इज हियर, काफी फार अपार्ट है. एंड स्कैंडियम एंड निकल, स्कैंडियम एंड निकल, ये तो बहुत रैंडम सा ऑप्शन था. स्कैंडियम और निकल, इट्स डिफिकल्ट टू से यार, कुड बी, पता नहीं, बट फॉर श्योर molybdenum and tungsten have the same answer. Hey, what's up? D is the right answer. Good job. Okay, Sadia, Gopinath, excellent stuff. Next question. What is the correct order of
the following elements with respect to the density. I've got this option, a few options over here. What do you think? Try this one out. Poonam, that's okay. Don't worry, don't worry. Hota hai, hota hai. Chromium, iron, cobalt, copper and zinc. मैंने इसका hint आपको दे दिया था. Hint मैंने हल्का सा आपको दे दिया था इसको already. But try it out. Try it out. What do you think? Option D for sure. Okay, Mayuk says option D for sure. All right. Let's see. Let's see. Let's see. बाकी लोग? Chaplin saying A. अच्छा. तो it could be A, it could be D, it could be C, कुछ भी हो सकता है. खैर, let me show you the whole periodic, I mean, this period. Yeah, just quickly show that period for you. Couple of you saying D, couple of you saying A, mostly D's. Gopinath, Lavanya, Deepanvita, Poonam are all saying D. Chaplin is saying A. Let's see, let's see, let's see. देखो, this is interesting, right? You'd expect it to be A, but the problem with A is कि zinc is very, very tiny. Okay. Sorry, it's not tiny, it's very, very big. Because uska radius bada hai. Okay, zinc just randomly becomes very large. You remember, the atomic radii goes like this. Okay, it has a dip and then it comes back up. You remember in the last session we said कि कम होता है, कम होता है, कम होता है, and then suddenly it rises up again. Okay, there are two factors. One is that you would expect the size to decrease, but after that there are too many d electrons. जैसे d electron आते रहते हैं तो थोड़ा जो है it starts to expand. So if the volume increases, then density will fall, right? Hence it must be D and not A. Okay. So zinc, chromium, Fe, cobalt and then copper. अरे अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भी कुछ अजीब सा order है. This has A has a weird order. Okay. D is okay. Yeah, quite a large atom. Absolutely, Mayuk. Absolutely. Preeti, yes, absolutely. Provat, good job on this. Deepanvita, Lavanya, Gopinath as well. All right. Cool. So let's move on to ionization enthalpy. Okay, हम लोग atomic radii, ionic radii के बारे में बात कर चुके हैं. Ionization enthalpy के बारे में बात करते हैं. ठीक है. So ionization enthalpy is of the first row of elements, which is the first row of transition elements. 3D is what we're going to talk about. From left to right, usually ionization enthalpy बढ़ती जाती है. Increases a little bit. What is ionization enthalpy? Energy required to pull off an electron. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी. ठीक है, cool. Why does it increase? Because well, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब यार, the nucleus doesn't want to let go of the electrons easily. So you need to give more energy to take it off. Okay. And दूसरी चीज है ये opposing idea कि यार d electrons fill हो रहे हैं तो थोड़ा repulsion होता है तो maybe थोड़ा सा निकल सकता है, can go away, right? But all in all, usually ionization enthalpy increases. Here is the whole list right over here. Or इस तरफ, sorry. So 3D series is here, okay, right here, and the numbers are right next to that. Now these numbers you see have a weird trend. Here बढ़ रहा है is more or less the same. These are the same. This is increasing, and then again थोड़ा घट रहा है. यार कुछ अजीब सा हो रहा है. Something weird is happening. Now only thing that kind of is okay with the trend is these, you know, these right here. But there's a little bit of variations, you know. There's कुछ अलग है. क्या अलग है? देखते हैं. ठीक है. In kilojoule per mole, ionization enthalpy का values. We'll just look at it over here. Okay. Small tiny animation that's just showing this. So look at that. Here, this trend and this is kind of okay. Beach mein titanium is a little weird. This guy nickel falls off. Sorry, titanium is still okay. ये दोनों गिर जाते हैं, right? If you kind of draw a line and all of that. So yeah, it's generally increases, but suddenly some places there are falls. Why is there a fall? We'll try and address that. Firstly, let's look at the most obvious thing. Between copper and zinc, why is there a very, very large increase in ionization enthalpy? Can you guys guess? I think you can, right? Both of these have a D10, both of them have a D10 electronic configuration. 4s1, 4s2. यहाँ पे है 4s1, यहाँ पे है 4s2. इसकी वजह से these happy guys, they don't really like giving away they don't like giving away electrons so much. Copper फिर भी ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है 4s का, चलो half filled चले जाओ. 4s2 bro, completely filled s orbital, so zinc is like नहीं होना है. Because of that, the radius is really, really large, as you guys pointed out, and the ionization enthalpy also is really, really large. Yeah, pretty stable. Hey, Anger, it's a interesting name. Mudassir, all right, great, cool. Here are the electronic configurations: fully filled, half filled, s orbital. मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ. Everything, most of the things that you have in the D block and F block elements can be explained on their electronic configurations. This is an example of that. Cool. Okay, great.
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ये है. नाउ यहाँ पे सेकंड और थर्ड भी दिया है, विल टॉक अबाउट द लेटर. लेट्स लुक एट दिस. There's a big difference, big change between chromium and manganese. Why do you think that is? Unusually high है मैंगनीज की. अगेन सेम आइडिया, रेडियस ज्यादा है क्रोमियम का मैंगनीज से, बट लुक एट दिस, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा है क्योंकि ये है 3d5 सीरीज एंड 4s2. ये भी 3d5 है, बट दिस 3d5 एंड 4s2, 3d5 एंड 4s2 जस्ट लाइक जिंक सडनली बहुत बढ़ जाता है, इसका भी सडनली बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, मोर स्टेबल बिकॉज इट्स फुली फिल्ड. Okay, yeah, absolutely. Cool. What about ionization energy when you go down the group? Now things get a little bit complicated. ठीक है, आपको I'm giving you a heads up. Little complicated. Okay. ये हो गई 3D series. Kind of गियर ऊपर नीचे वाला ट्रेंड. अब यार 4D does its कुछ भी कर रहा है. Look at 5D. And then things just become a little okay, kind of बढ़ रहा है. बट इसके ऊपर इसके नीचे कौन कहां जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है. इट्स जस्ट सो वियर्ड. सो लेट्स लुक एट जस्ट द फर्स्ट एलिमेंट, स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथेनम. जस्ट द फर्स्ट एलिमेंट इफ यू सी, देन लाइक हाँ भाई, एटलीस्ट पहला एलिमेंट तो जस्ट डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ओके, इट इज डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड. एज यू गो डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज. थियोरेटिकली इट शुड इंक्रीज, बड़ा हुआ एंड ऑल ऑफ दैट एटसेट्रा. सॉरी, इट शुड डिक्रीज, राइट? क्योंकि अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है. अगर इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, यू नीड टू गिव इट लेस एनर्जी. शुड डिक्रीज. ओके, हाउ टू रिमेंबर दीस ट्रेंड्स? दीपान्विता, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस. रिमेंबर करने का तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स, कौन कहां पे क्या है. यू नीड टू नो कि जनरली बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस. एज यू गो डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली रिड्यूसेस, कम हो रहा है बिकॉज साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा. दैट्स अ जनरल थिंग. Exceptions to the rule, right? Look at this. The sudden increase in 5D is because of lanthanide contraction. मतलब lanthanide contraction की वजह से बहुत छोटा हो गया. Exception Deepanvita and everybody else. बहुत छोटा हो गया. अगर बहुत छोटा हो गया, then it's very difficult to remove electrons because nuclear charge and all of that. Lanthanide contraction मतलब lanthanide is poorly shielding the outer electrons, so they come in close. Size छोटा हो जाता है. इसलिए 5D का sudden जो है increase जो है is because of this. Okay? Cool. नहीं लावण्या, नो निमोनिक, कोई निमोनिक की जरूरत नहीं, कभी याद नहीं करना है. ओके, दिस इज माय सजेशन. लॉट ऑफ पीपल सजेस्ट याद करो. मैंने लाइफ में कभी याद नहीं किया है. आई डिड प्रीटी ऑल राइट इन दीस टेस्ट. ठीक है, नॉट बोस्टिंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. एंड मेरे दोस्त भी थे. आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन इन माय फ्रेंड सर्कल हु मक्ड इट. ओके, मे बी दैट्स जस्ट हाउ माय कोचिंग वाज. And all of us, like 10 of us, went to NIT Surathkal together. So we did okay in the test, just giving you results, right? You don't have to mug mnemonics. You need to know 1 to 30 elements. और बाकी जो जहां पे एक्सेप्शन कुछ ना कुछ जहां पे रीड द एनसीईआरटी, ट्राई एंड रिमेंबर दैट. सारे एलिमेंट्स याद करके क्या करोगे यार? यू हैव सो मेनी अमेजिंग थिंग्स टू रिमेंबर इन बायो. फोकस ऑन दैट. यहां पे ये सब में डोंट वेस्ट टाइम. ठीक है, कूल. डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. 5D इज ग्रेटर देन 4D बिकॉज ऑफ लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन. कूल, प्योर पोर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट आइडिया आई वांट यू टू फोकस ऑन इज लुक एट दिस. मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरी आपको मालूम है, Hg इज मर्क्यूरी, जिंक एंड कैडमियम. What is happening here? This is also down the group. Down the group, fully filled है. Fully filled है इसलिए sudden spikes होते हैं. Because they are fully filled, hence there is a sudden spike there. Okay. There is no regular trend. When you go from 3D to 4D, when you're comparing these two, 3D and 4D के बाद में trend नहीं है. But something interesting happens. Look at this. Palladium suddenly ऊपर है. Because in this case, palladium also is fully filled. Now, if you're going to ask me why, यार nature है, मैं क्या करूं? ठीक है. Because in this case, copper is, fully filled, 3D10. But in case of palladium becomes fully filled. ठीक है, exception to the rule. ठीक है? Cool. So, ये irregular trend between 3D and 4D इसलिए कि दो चीजें oppose कर रही है. Radius बढ़ रहा है, but nuclear charge भी बढ़ रहा है. तो इसलिए कोई trend, कुछ पक्का trend नहीं मिल रहा है. ठीक है? Hey, Medico, what's up? Lanthanum and TA का, I forgot this thing, but 14 lanthanum elements, so this much variation. Okay. You're talking about 4D and 5D. I'm talking about 3D and 4D. Yeah, between 4D and 5D, what you're saying, Mayuk, is absolutely correct. But 3D and 4D is a little more complicated. Yeah. 11 के चैप्टर कब करवाओगे? 11 के चल रहे हैं मोहित, तुम 6 बजे देखे नहीं तुमने? 6 बजे तो किया था 11वीं के चैप्टर. Yes, absolutely. I'm great, Medico. How you doing? You're done with. You have holidays now. कैसा चल रहा है? You're gonna come on time? 15 minutes? It's okay. School. It's good that you're here. Palladium, as Mayuk said, is an exception to the rule because abnormally higher because of its relatively stable configuration, which is 4D,
10. Sweet. Okay, cool. Let's look at standard electron potential and reactivity. And ये काफी related है to this oxidation state and that whole ionization energy वाला idea. Ionization energy gives you half of the picture. देखो, when you try and create an ion, what are you doing? In water, assuming पानी में डाल रहे हो. You're removing its electrons and you're putting it in water. As soon as you put it in water, hydration energy comes into the picture. That's how it forms, right? Two opposing factors हैं. एक energy input है, दूसरा energy release है. Energy input is ionization energy. Pulling electrons out one by one, plucking them out. 1, 2, 3, 3 electron निकाल रहे हो. Why does this process happen naturally? क्योंकि hydration energy. अगर hydration energy enough है, if there's enough energy release, ठीक है यार, give enough, जितना चाहिए हम देंगे. If they are bankrolling the ionization energy, then you're good. If hydration energy is greater than ionization energy का sum, then the ion is stable. Okay? अब आपने सुन लिया, now we'll also put it in writing. Okay, good stuff. पंजाबी songs जी, channel देख लो यार, पता चल जाएंगे क्या क्या कर रहे हैं. Let's focus on this right now. I'm doing redox there. Yeah, all right, cool. So, the standard electrode potential का idea is to figure out the stability of different oxidation states and the reactivity of transition elements. दो चीजें, कौन सा state ज्यादा stable है. अब देखो, more than one oxidation state is shown by all these d block elements. Which one is more stable? That is what we have to ascertain, and वहां पे हमको help करेगा standard electrode potential. You guys have done electrochemistry now. We don't have to repeat that too much. So let's look at this first factor of stability. देखो, two things are what we're going to look at. NCERT में यही दोनों चीजें. The stability of the 2 plus state and the stability of the 3 plus state. So we're doing E naught 2 plus to 0 and 3 plus to 2. So between 2 and 0 कौन सा stable है? Between 3 and 2 कौन सा stable है? Right? Now if E naught value is positive, that means that reaction is spontaneous. Are you with me? अगर E naught is positive, that means delta G naught is negative, मतलब reaction is spontaneous. तो अगर E naught is positive, मतलब ion gets reduced, which means that the one on the right is more stable than the one on the left. Are you following my train of thought? ये समझ में आ रहा है? मैंने कहीं लिखा नहीं है, मैंने कहीं बग नहीं किया है. It's just logic. Are you following the train of thought, guys? Yeah? फिर से बोलूं? If this value is positive, then delta G is negative. Then this second ion is more stable. If not, then ulta होगा, right? If it's negative, that means अरे नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहता, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है. Cool? Okay, great. That's it. Now, the trends in this. Now, this graph is also an NCERT. ठीक है? You see that most of these are negative. This is E naught of M2 plus 2 M plus. मतलब, most of these like being in the plus 2 state, at least in the starting. As you go left to right, bhai, we are happy being the metal. Look at this, guys. Look at copper. Copper is like, bhai, मुझे नहीं बनना है ion. I'm happy being copper. I don't want to become Cu2 plus. According to this information. But remember, this is half the picture. This is half the picture. Okay. ठीक है? Cool. So look at this. And again, manganese is playing spoilsport, saying, chill, bro. I'll be more negative than whatever. ठीक है? The general trend of less than E naught negative values across the series related to general increases sum of the first and second ionization enthalpies. So we are summing first and second ionization enthalpies, and uski value is compensated by the hydration wala idea. Okay. If it is compensated, then it is good. If it's not, then we're like, nahi karna hai. It's good. ठीक है? Cool. So why is copper? Let's identify the elephant in the room. Pehle, black sheep, copper. Why does copper show a positive E naught value? Again, we are talking about E naught Cu2 plus to Cu. Okay, that's a specific reaction we're talking about. Now, there are two things that are happening. एक चीज enthalpy of atomization और ionization energy है. बहुत high energy चाहिए Cu plus से Cu2 plus बनाने में, and that is not balanced by the hydration enthalpy. That's what I've been saying from starting. Two things. पहले you take copper, make it a gas, and then you take that gas copper atoms, gaseous copper atom, उसमें से electron निकालो. Theoretically, right? All this is mental concoction. We are thinking कि एक करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. Because thermodynamics का idea है, you do a reaction in one step or 10 steps, the same thing. That's the idea we're using. Everything is connected, है ना? So all of this is connected to thermodynamics. That's why you can say कि मन में चलो एक copper atom को बनाते हैं gas, फिर उससे निकालते हैं electron. How are we able to say it? Because they're all state functions. ठीक है, delta is state function. खैर, this is the total energy input that's required, और output मतलब इतना निकल रहा है. Hydration energy अगर if it's not sufficient, this reaction won't happen. It's not spontaneous.
So that's what is happening in case of copper. Hydration energy is low. Like यार नहीं बनना है, this is too much, don't have enough energy, no bank balance. इसीलिए this reaction does not happen, and this is why hydrogen say acid, I mean when you put an acid in copper, no hydrogen liberated, but all the other metals, when you put hydrogen, when you put acid, hydrogen is liberated. See, zinc, even zinc gives this reaction. Zinc is 4s2 3d10, very stable, but even zinc gives this reaction, but copper does not because of hydration energy idea. Okay, yes Mayuk, thank you for summarizing that. ठीक है, now here are other culprits. मैंगनीज, निकल और जिंक में क्या प्रॉब्लम है भाई? जिंक में इन दोनों में बहुत नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव है. व्हाई इज इट? 2 points. One, first one, half filled, fully filled, pretty stable guys, pretty stable. Mn2 plus and Zn2 plus. They're both chill. Why? क्योंकि हमने निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, they're happy and merry and all of that. Second idea is that nickel. Why is nickel so low? Nickel का जो है रेडियस बहुत कम है, so it has very high charge density and it has a very high hydration energy. Okay, 2 points. High charge density and highest hydration energy, in fact, of 3D elements. Cool. So that was about M2 plus and M plus. M2 plus to M E0 values. Now let's look at M3 plus to M2 plus E0 values. Now this is done beautifully using this small table. This will give you an actual idea. Can you quickly tell me, ये ऊपर negative और positive value का क्या मतलब है? Negative value मतलब भाई reaction होगा ही नहीं. Like I am happy being SC3 plus. I don't want to become SC2 plus. That is what this is saying. Why is that? We'll talk about that. ठीक है, but उससे पहले one step back is what is this E0? ये तो value दी नहीं रही है because nickel, copper and zinc, nickel, copper and zinc are not going to form 3 plus ion. So you don't have M3 plus to M2 plus. You don't have that in literature because who's going to make nickel 3 plus, right? At this point, we don't have that. Okay. Zainul, what's up? Abdeen, good evening. Check out the schedule. Telegram, join the Telegram group. You'll get the actual schedule. ठीक है? हम दोनों पढ़ाते हैं. 11वीं और 12वीं का दोनों पढ़ा रहे हैं. Depending on, I do 6 sessions in a week right now on the NEET channel. थोड़ा PYQ, थोड़ा a lot of mix and match, right? So just check it out. Check the schedule out. You'll get an exact idea of when we're doing what. On the Telegram group, we post everything regularly. ठीक है? Cool. Usually what I do is I alternate. अगर मैंने आज अभी ली है 12th की क्लास, अगली क्लास 11th की लेता हूँ. Most of the time. PYQs are an exception. That has a separate this thing. खैर, Mayuk, yes. Yes, they do not react with HCl. Good job. They don't. That I feel, yeah, you're absolutely right. Does not react with HCl. Generally, the value of E0 increases. I have told you, ये नहीं होता है, ठीक है. Next idea I want to talk about is this. Look at this. Zinc is more stable. Zn2 plus is more stable due to stable D10 configuration. इसलिए you don't even have a Zn3 plus to Zn2 plus value. It doesn't exist. And in this case, okay, a positive value means the reaction goes forward. What reaction goes forward? Mn3 plus becomes Mn2 plus. This is a, what is it? Delta G is equal to negative. This is a spontaneous reaction. Yeah, that's what this means. पूरा electrochemistry किस लिए पढ़ा था? इसी चीज के लिए पढ़ा था, है ना? This suddenly has a very high positive value because Mn2 plus is D5 and S0, 4S0, right? Argon पूरा लिखना चाहो तो, ठीक है? Any doubts? Any doubts so far? Zainul, I just did a session on redox. You can check that out. 6 बजे किया था if you want to check out 11th grade stuff there. Yeah? We good? Alright, good stuff, Lavanya. अब रिएक्टिविटी कैसे निकालें? मैंने बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट. यही सेम चीज है. E0 से हम लोग रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं, राइट? दे जनरली हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके, so they are mostly electropositive and they dissolve mineral acids, exception being your good friend copper. Yeah, some of them are noble and non-reactive, strong acids, as Mayuk pointed out. Yeah, the whole goal is across the series, these values, they show a decreasing tendency to form a divalent cation. इस अंग्रेजी लफ्ज का क्या मतलब है? As we go from left to right, the negative value means 2 plus is stable. That's what this means. But अगर positive value ऊपर ऊपर जा रही है, मतलब 2 plus is not stable. It is happy being in the unbonded state. Just the pure metal is more stable. ठीक है? इसीलिए तो हर चीज आपको कॉपर की मिलती है, right? You have most fancy utensils made out of copper. इतनी जल्दी नहीं ऑक्सीडाइज होता, बट थोड़ा होता भी है तो इट्स चिल. खैर,
Why? Because sum of two first transition enthalpy बहुत ज़्यादा है. And here are your exceptions to this rule. Now, what else can I do? Look at this. अगर ये दोनों बहुत positive हैं, that means that Mn3 plus giving Mn2 plus and CO3 plus giving CO2 plus are awesome. They are spontaneous. क्यों? क्योंकि E naught cell is positive. Half reaction का at least E naught is positive. यानी कि ये हो रहा है reduce. So it must be a very strong oxidizing agent. देखो crossover between we are having what do you call that, a cannon event between redox reactions and DNF block. अभी पढ़ाया था redox में, just अभी पढ़ाया था, है ना, कि oxidizing agent क्या होता है, जो दूसरे को reduce करे, right, and खुद हो जाए नहीं सॉरी व्हाट एम आई सेइंग ड्यूड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए. एंड देखो खुद रिड्यूस होने के लिए तो ये बिल्कुल तैयार है. Mn3+ and cobalt3+ are both quite ready. Okay, what else is weird here? This is interesting, right? All of these are very strong reducing agents, which means कि they prefer forming the 2+, or no, not 2+, 3+ ion, okay, from 2+, right? So you start with chromium 2+, pretty happy to become chromium 3+. It's a strong reducing agent. So there you go. अब इससे बन जाएंगे all kind of permutation and combinations of questions where you talk about which of these is a reducing agent, which of these is an oxidizing agent. ये सब चीजें, ठीक है. Simple way of to remember is up to chromium, they're strong reducing agent, manganese oxidizing agent, cobalt also oxidizing agent, iron also oxidizing agent works. But remember, हम लोग अब बात कर रहे हैं E naught M3+ से 2+ की, not no more from 2+ to 0. Hey Vikas, good to see you here. Welcome, welcome, welcome. Here, try out a question. 4 successive members of the first series of the transition metals are listed below. For which of them the standard potential has a positive sign? AIPMT, those are 12 का सवाल. Try it out. Vikas, why don't you try this question out? Everybody else is well on the chat. Yeah, Mayuk, for sure. चक्कर ये है ना कि according to the table, we're just talking about the E naught values, right? But reaction wise, it's a little hard to do that. E naught is not the only thing that decides it. Kinetically भी चीजें होती है, right? So there are two sides to a reaction. One is energetics, दूसरा is kinetics, ठीक है? So E naught value talks about energetics. Kinetics is also a factor. But that's a very good point, Mayuk. Mayuk, Deepanvita, Poonam, and Vikas are all saying option C. Excellent work. Excellent work. Yes, absolutely. This is the exception that you need to remember. Yeah, पूरा चीज याद करने की जरूरत नहीं है. Exceptions याद रखो. Chemistry. Cool. Good job. Let's look at my favorite part of this session today. Magnetic properties. There are two broad things that we are going to look at. Paramagnetism and diamagnetism. Paramagnetism, अब मृणाल जी तो आपको physics पढ़ा ही रहे हैं, अभिषेक भी पढ़ा रहे हैं, is when a substance aligns itself in the direction of the magnetic field. मतलब it is disturbed by the magnetic field. Yeah, it's not going to stay chill because there are some dipoles being formed. Electric dipoles are there inside. मैं ज्यादा फिजिक्स ही जानता हूँ, बस थोड़ा सा आपको बस उसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. यू कैन आस्क मृणाल एंड अभिषेक मोर अबाउट दिस कि कैसे होता है पैरामैग्नेटिज्म, कैसे होता है डायमैग्नेटिज्म एंड ऑल दैट. बट बेसिकली diamagnetic substances, they are repelled by the applied field. Paramagnetic ones are attracted, मतलब in the direction and opposite direction of the magnetic field. ठीक है? So paramagnetic substances होते क्या है? अब हम लोग इसकी बात पैरामैग्नेटिज्म की क्यों बात कर रहे हैं? We're supposed to talk about magnetic character of 3D elements. I get that. What is this doing? यहाँ पे कहाँ से आए डाइपोल्स एंड ऑल? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां हो इलेक्ट्रिसिटी वहां हुआ मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. Electrons are moving. If electrons are moving, there will be magnetism. That's what we have to talk about. But not this general. Okay. इलेक्ट्रॉन तो बहुत है, एक ऐसा मूव कर रहा है, वैसा उल्टा मूव कर रहा है, कैंसिल हो सकता है. बहुत ही लेमैन्स टर्म है, राइट? आई एम बीइंग वेरी वेरी क्रूड इन दिस. देयर इज क्वांटम मेक स्टफ दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड. बट व्हाट यू नीड टू नो more importantly is कि अगर if there are unpaired electrons, then we have magnetism. Okay. So they are very strongly attracted or known as ferromagnetism. This I think solid state में भी डिटेल किया होगा आप लोगों ने. Yeah. Lavanya, 8:15. Yeah, that's the plan. We started at 7:15, right? So we'll get done by 8:15. इसके बाद this is the only session today. आज इसके बाद है नहीं. So fun story. बैंगलोर में बंद है.
So yeah, I happen to have a setup at home, so I'm here for you. Otherwise the office में छुट्टी है आज, and मैं छुट्टी के दिन काम कर रहा हूँ, which is good. I like teaching you guys. मुझे तो मजा आ रहा है. It doesn't even feel like काम, right? Because हम लोग सेशन कर रहे हैं. All right, cool. अरे यार कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, पता नहीं, सम बंद चल रहा है बैंगलोर, सो आवर ऑफिस गेव सम हॉलिडे. ठीक है, यू रीड अबाउट ऑल अबाउट दैट इन पेपर. लेट्स फोकस ऑन केमिस्ट्री राइट नाउ. हमको केमिस्ट्री आती है बस. पैरामैग्नेटिज्म arises from presence of unpaired electrons. That's the main idea. ट्रांजिशन मेटल्स में कभी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, एंड विच गिव्स राइज टू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द मदर ऑफ एवरीथिंग इन डीप एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. मैंने बोला था पहले सेशन में, दैट्स द थिंग दैट ड्राइव्स एवरीथिंग. व्हाई डज दिस लीड टू पैरामैग्नेटिज्म? देखो, देयर आर ब्रॉड थिंग्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मूव करें तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. बहुत ही क्रूड तरीके से मैंने बताया है, बट broadly that, yeah, spin and orbital angular momentum. Okay, so let's get to the main part of this. Yeah, how do you calculate? This is the formula जो thumbnail पे भी है, magnetic moment का, under root n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. अब ये कैसे निकालो? This unit is Bohr magneton, okay, Bm यानी कि this. How do you do this? See, get the electronic configuration पहले. Mn2 plus यानी कि argon followed by 3d5 4s0. ये मैंने कैसे निकाला? पहले लेट्स जस्ट आइडेंटिफाई कैसे किया है इसको. Mn है 20, कितना है 25, राइट? दैट्स 18 प्लस 7. 18 क्यों? क्योंकि आर्गॉन, राइट, प्लस 7. तो मैंने भर दिया पहले 4s2. फिलिंग में पहले 4s2 आएगा बिकॉज लोअर एनर्जी, देन आई स्टार्ट फिलिंग दिस. तो बचे 5, बट निकलते समय पहले जाएंगे 4s2, तो दिस ये निकल गए, तो बचा 3d5. देखो, इससे ऐसे मैंने कैलकुलेट किया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. उसके बाद न्यू निकालने में तो यू गेट दिस क्लियर, राइट, 5.92. ओके, सादिया नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा मतलब? टुडे इज जस्ट, दिस इज द लास्ट सेशन टुडे, आज के लिए. यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, वी अपडेट दैट रेगुलरली, राइट? ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग यहाँ पे यूट्यूब में भी डाल देते हैं, बट यूट्यूब हैज दिस वियर्ड वे ऑफ नोटिफिकेशन ना, कभी देता है नहीं देता है, डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग्स ऑफ नोटिफिकेशन. ऑल्सो टेलीग्राम इज ऑल्सो ईजी, आई फील, फॉर यू गाइज टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. वी कैन इंटरैक्ट देयर एज वेल. ओके, द ऑफिशियल आकाश बायजूस नीट डिजिटल, आकाश नीट डिजिटल नाम है, जो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट. ठीक है, कूल. नाउ लुक एट दिस. पूरी टेबल है यार, याद करने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज नहीं है, कैलकुलेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है. बट यू सी समथिंग इंटरेस्टिंग. कैलकुलेटेड नंबर का पहला डिजिट इज द सेम एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. छोटी सी क्विक सी मैथमेटिकल ट्रिक है, राइट? अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, ओके, इज, उसका जो पहला डिजिट होगा इज गोइंग टू बी लेस देन n प्लस 1 होल स्क्वायर. अब इसको बारे में बाद में सोचना तुम लोग, ठीक है? इट्स अ स्मॉल मैथमेटिकल इनइक्वालिटी. अगर इनइक्वालिटी नहीं भी समझ में आई तो डोंट वरी अबाउट इट. बट ये देखो, दिस इज वेरी क्लियर टू सी. 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.73, 2 मतलब 2.84, 3 मतलब 3.87, 4 मतलब 4.9, 5.92. ये थी एक क्विक ट्रिक दैट आई ऑलवेज यूज्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल टू गेट टू द आंसर ऑफ दिस. मंजब, गुड इवनिंग. हाँ भाई, एनर्जी ले आते तुम इतने हाथ उठा के. क्या सिलेबस नीट का न्यू होगा तो बताएगा एनटीए. जब एनटीए बताएगा हम आपको बता देंगे. I don't have a special line to CBSE or NTA to give you that answer. Yeah. अभी के लिए we'll follow what we did last year until there is an official intimation that says that we should do otherwise. Which, as always, you will find short बन जाएगा, Telegram पे announcement हो जाएगा. All that we'll do. I mean, we were one of the first ones to tell you about the dates that came out. Check that out, right? चलो, खैर. Observed values थोड़ी सी अलग हैं from calculated, but we'll focus on calculating. ठीक है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा. डिड यू नोटिस दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गो टू अ मैक्सिमम d5, d6 में कम होने जाते हैं. ये क्यों कम क्यों हो रहे हैं? एक मिनट इसको एक मिनट देख लें, कम क्यों हो रहे हैं. देखो d7, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस राइट हियर, d7. इसमें 3 कैसे आए? 1 2 3 4 5. पहले भरो 1 1, फिर दूसरा भरना शुरू करो 6 और 7, तो बच गए 3. दैट्स इट. ठीक है, बी कंफर्टेबल विद दिस. मैं ये बेसिक चीज भी फिर से रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्लीज डू दिस. ठीक है, यू नीड टू डू दिस फॉर दिस. ओके, लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन ऑन दिस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट पैरामैग्नेटिक? एम्स 2000 का सवाल. जैनुल पीडीएफ किस चीज का? या ओल्ड एनसीईआरटी, श्योर. रूल द फिलिंग ऑर्बिटल, यस यस यस. विकास, ओल्ड मतलब कौन से? आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब ऑन द नीट चैनल फ्रॉम जून.
I think. So you can check it out. Just type my name Ashish in the channel. You'll get all of my sessions here. Or join the Telegram channel, Aakash BYJU'S Digital. I mean, नाम भूल रहा हूँ. I think it's Aakash. नाम देख लें, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है. There are two channels and I'm on both of them, JEE and NEET. तो मैं एक का नाम एक है, whatever. Check out डिस्क्रिप्शन में है लिंक. You'll find whatever we have done there. Okay. अगर और पुराने चाहिए तो 2019 के JEE वाले सेशंस, then go on the JEE channel. You'll find my session there as well. और चाहिए तो ऐप पे भी है, ठीक है. आकाश बायजूस ऐप पे भी सेशन है. It sounds like I'm doing a promotional thing here, but somebody asked here. I'm just poor guy. Because बायजूस, आकाश बायजूस ऐप पे है for solved questions. The JEE channel पे है solved questions and NEET पे have these lectures as well. Which is following is greatest paramagnetic? कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लावण्या बोल रही है. सी, पूनम सी, मयूख सी, सादिया सी, दीपान्विता सी, लावण्या. हाँ, तो है कितने? 5 लोग बोल रहे हैं सी. तो लगता है सी ही होगा. कैसे होगा ग्रेटेस्ट पैरामैग्नेटिक सी? Fe है 26, यानी कि 18 प्लस 8, यानी कि 2 चले गए, यानी कि 6 बचे. अब 6 बचे, this is Fe2 plus. If I make it Fe3 plus, then life is good, right? This is Fe3 plus. It has 5 unpaired electrons. Hence B is better than C. And C is better than B. All right. Good job, everybody. Good job. Next one. A compound of metal ion Mx plus Z equal 24 has a spin-only magnetic moment of 15 Bohr magneton, root 15. The number of unpaired electrons is the compound are what? ये मैंने ट्रिक बताई थी ना? Use that trick to do this. Root 15 is a little less than root 16. A little less than 4, which means 3 point something. Answer is 3. Mark it. Move on. 5 सेकंड वाला है, 10 सेकंड में करने वाला है ये. Good job मयूख. Absolutely. पूनम, दीपान्विता, ग्रेट वर्क. जल्दी करने वाला मेथड आप लोग समझ गए, है ना? इसका जो भी आंसर मिलता है, गेट टू द नियरेस्ट स्क्वायर, उससे एक नंबर कम कर दो, ठीक है? यू विल इंटरनलाइज दिस. बहुत जल्दी करने वाला है. सादिया, गुड जॉब. दी इज द राइट आंसर. यस पूनम, एब्सोल्युटली. मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस? सोच के बताइए, जरूर बताइए. क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट डू यू ऑल थिंक? टू 2.83. इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखते हैं. देखो, टाइटेनियम है 22, यानी कि 18 प्लस 2 प्लस 2. व्हाई डिड आई राइट लाइक दिस? ये प्लस 2 है 4s के, ये हो गए 3d के. अच्छा. खैर, लुक्स लाइक Ti2 plus will have 2 unpaired electrons. ये 2.83 by the way is 2, n equal to 2, ठीक है? That I hope you guys have figured out. तो Ti2 plus must be answer. It's not there. निकल का क्या होना चाहिए? निकल का 28 है. 28 इसी आइडिया से क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे. 18 प्लस 10, 18 माइनस 2 हो गया 8. तो 8 होंगे उसमें. 3D में 8 हो जाएंगे. इफ इट इज Ni2 प्लस में 3D में हो गए 8. ओह, यही हो गया आंसर. Ni2 plus is this configuration. Yeah, looks like this is most likely the answer. Let's look at chromium 3 plus and Mn2 plus also. Chromium 3 plus यानी कि 18 plus 6 minus 3, right? 24 minus 3. यानी कि है 3 इलेक्ट्रॉन unpaired, okay? Which means not the answer. Mn2 plus similarly 25, and by now I know for sure कि ये D5 है भाई. मैंने अभी आपके साथ अभी 3-4 सवाल किए हैं, तो I'm sure this is D5. ठीक है? Not the answer. So nickel यानी कि B must be the answer. Zainul says A. Zainul, you see why it's not A? Ti2 plus has 2 electrons. ठीक है? And Sangamesh says B. Excellent work. Lavanya, yes. It's okay. All right. B is the right answer. मैंने जल्दी किया because this is how you have to solve in the paper. If you want me to explain it, I can explain it फिर से. 2.83 से मैंने 2 कैसे निकाला? देखो, is under root of x into x plus 2 is equal to 2.83. मैंने ट्रिक बताई थी ना. 2.83 मतलब अच्छा 2 ही होगा इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट. 2 into 2 plus 2, तो the root of 4 into 2 which is 8. तो this is root 9 से थोड़ा कम. Yeah, root 8 is going to be a little lower than root 9. मतलब 3 से थोड़ा कम. ये प्रूफ दे दिया आपको. How first you arrive कि देखो n equal to 2. I gave you a quick trick also how to do that. उसके बाद all of these things take it as 18 plus 2 plus whatever, plus 2 for 4s, and then बाकी जो भी है इसका 3D में होंगे. ठीक है? ये आर्गॉन का.
So get quick at writing these electronic configurations. Okay? Any doubts, guys? Doubts है तो पूछ लो. कोई जल्दी नहीं है लाइफ में. कोई जल्दी नहीं है लाइफ में. Yeah? If you feel that I'm doing this quickly, let me know. I can slow down. The reason I'm going at the pace that I am, I want to make sure that everybody on the live session at least को मजा आ रहा है. Right? Okay. Cool. ठीक है. How do you figure out the color of something? Well, it's difficult to find out color कौन सा होगा, but color होगा कि नहीं होगा, that has to do with this same electron idea. If there are unpaired electrons, then color होगा. ठीक है? You with me there? So electron transitions happen, okay, because of which there is a color that is shown. Okay, DD transition, just सीधे बोलते हैं उसको. Unpaired electrons. Now, if unpaired electrons do not exist, d electrons, then it is not going to be a colored ion. मतलब सफेद होगा. अगर if you dry out the powder, it will be सफेद. अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो उसका will be colorless. Okay, cool. ठीक है. Lower energy d orbital excited to higher energy d orbital, तो DD transition इसको बोलते हैं. This corresponds to some sort of energy absorbed. Light की दो aspects होते हैं ना, 3 aspects. Light that is emitted. Okay, forget that. अगर light आ रही है, it hits my hand, so it's going to get reflected, or it could get absorbed, or it get transmitted. Okay, you remember this from physics? इतना basic चीज याद आ रही है, right? So we'll skip the reflected part. We'll talk about transmitted and absorbed. ठीक है? तो अगर कोई frequency light की absorb हो गई, तो बाकी उसका complement is the color you'll see. थोड़ा सा physics का मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी physics. The frequency generally lies in the visible region. The color observed corresponds to the complementary color of the light absorbed. Light reflect भूल जाते हैं, absorb हो रही है और transmit हो रही है. What gets absorbed उसका complementary color दिखता है. This is cool, right? This is all right? Yeah? इसीलिए colloidal solution में looks blue, but the light that goes after it looks red. क्योंकि अगर blue light यहाँ पे दिख रही है तो मतलब बची सिर्फ लाल वाली लाइट. You remember this from colloids? I don't think we have done this. Have we done this? हमने शायद नहीं किया है. Solution हमने साथ में नहीं किया है. But you must have been taught that by Anup ji and other people on this channel. ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ये 9th और 10th grade में भी पढ़ाते थे. खैर, cool. Formation of colored ions. ये सारे रटना चाहो तो रट सकते हो, but yeah, TI जरूरत नहीं लगती है, but अगर मन करे, ये green is important. ठीक है, ये ग्रीन है, ये जरूरी है. Mn2+ is light pink. ठीक है. Fe3+ clearly is yellow. Don't have to write that down, but ठीक है. This is pink. This is green. Blue. So देखो, when I say Cu2+, पानी के साथ they form hydrated complexes. Now I'm not going to go into detail of that, but because of that color होता है. ठीक है. Ligand, पानी behave like a ligand, OH- sometimes behave like a ligand, etc., etc. So frequency of light absorbed is determined by the nature of the ligand. Ligand क्या बोला है, हम लोग पढ़ेंगे coordination compounds में, and hence you get the color of the compound. चलो एक सवाल लेते हैं. You can't, bro, you can't determine color and all. वो तुम देख के अब करो भाई, हाँ ये color है, ये है. That's it. Determine in the sense कि not, it is experimental. It's not something you can predict. इससे ये color आएगा. It's a little hard to do. It's a little hard to do. ठीक है. You can predict theoretically if you know the exact structure, molecular structure. reality में इतना होता है तो एक molecule दूसरे molecule के बीच में जो distance इतना होगा तो light इतना scatter करेगा, इतना बाहर जाएगा, then you can predict. But at our level, we can't predict. Okay. Yeah. Okay, perfect. You came to say bye. Sure, bye to you as well. Option B says Mayuk and Lavanya. बहुत जल्दी दिया आपने आंसर. सही है, बढ़िया. AIPMD 2006 का सवाल. Both ions are colored. Let's find out colorless. Which ones are not colored? Let's identify that first. देखो, scandium 23, when it becomes Sc3+, it is not colored. क्यों? क्योंकि 23 minus 5 हो गया 18, which is argon, plus 2 हो गया 20. मतलब कि 3 electrons in d orbital. ये 2 है 4sk. ठीक है. सो अगर इसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये हो गया कलरलेस. तो जहां पे भी स्कैंडियम है उसको हटा देते हैं. बोथ आयंस आर कलर्ड ना, एक्सक्यूज मी. सो आई रिमूव Sc3+. चलो, एक हटा दिया. कॉपर 29, ये तो कलर होगा यार. कॉपर इसमें ऑप्शन में है. अच्छा है. ओके, लेट्स सी, विल थिंक अबाउट कॉपर लेटर.
बट कैन वी फिगर समथिंग एल्स आउट? कॉपर का भी देख सकते हैं. इनफैक्ट कॉपर इज अ D10 स्पीशीज, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दैट. D10 स्पीशीज, D10 4s1. तो 4s1 का हटा दो, D10 है फिर भी फुली फिल्ड है, ये भी कॉपर भी नहीं होगा. अरे तो ये तो एलिमिनेशन से ही मिल गया. एलिमिनेशन से आंसर हो गया बी. बी कंफर्म. SCN copper eliminated. Absolutely right. Good job. Sadia, Lavanya, yeah, absolutely. Good job, Mayuk. Sakivani is also saying B. Hey, Sakivani, what's up? I don't think I've seen you around here before. Good job, good job. Ni2 plus and Ti3 minus. मजा आ रहा है ना? बाप रे, इतनी फंकी चीजें कर रहे हैं हम लोग. That's awesome. That is awesome. Couple of small things to do. Then we'll call it a day. ठीक है? छोटी छोटी चीजें हम लोग देखते हैं. One of the things that I want to cover is the formation of complex compounds. Now, complex compounds का formation हम लोग डिटेल में कुछ नहीं करने वाले. We're just going to say कि look boss, yeah, I don't think we'll talk about it right now. We'll talk about coordination chemistry. The whole thing is just about that. The ligand stuff I was talking about, that's these chaps right here. And the reason that these forms these weird compounds, complex ones, is because there are a lot of empty d orbitals, and these ligands have extra electrons to give away, either in the form of a pair of electrons or a negative charge or whatever else. In some way, they have some electrons that can form bonds with empty d orbitals. Okay, इसीलिए बनते हैं. There's some sharing of electrons happens, and these are called complex species. Okay, they're very very interesting properties, which means कि अगर मैं इसको पानी में डालूंगा, FeCN, some compound with this, it will not break up into iron and Cn minus ions, right? That's the first thing, first rule of Fight Club kind of thing. First thing about complex compounds. पानी में डालने से वो separate नहीं होंगे. That's what makes them a complex compound. ठीक है? Yeah, easy question. That's good, Lavanya. That's good. अरे क्यों भाई? Why are you saying sorry for saying भाई? Hi बोलते हैं, ठीक है? It's okay. As long as you're benefiting, guys. My goal is that you benefit and you do well in whatever goal you're setting. ठीक है? बाकी हम लोग we have fun. Live में ये तो मजा आता है. आप लोग से interact करने को मिलता है. It's great. Okay, sweet. So why do they form complex compounds? मैंने आपको एक आइडिया बता दिया था, because of empty orbitals. The other ones are कि they're kind of small, okay, as compared to, well, regular p block elements and all of that. They have a very very high charge, and this is the single most important thing. There are availability of d orbitals for these what you might call it, availability of d orbitals for these bonds to get formed. एक चीज blink करके चला गया, which was catalytic properties of chemical of these guys. Now this also has to do with the similar ideas, because there are empty orbitals and there are multiple oxidation states shown. So what is a catalyst? It alters the rate of the reaction without getting affected itself. बहुत बार पढ़ा है आपने, right? In kinetics, also in surface chemistry, right? पूरा पढ़ा है आपने. They have multiple oxidation states and they can form complexes. This is the main idea behind this. Here are some examples. Vanadium oxide in contact process, finely divide iron in Haber's process, and nickel in catalytic hydrogenation. यानी कि वो करता है reduce, oxidize, reduce, adding hydrogen, reduction. Okay, चलो, quick questions, just a couple of questions and then we are done for the day. Try करो. The catalytic activity of transition metals and their compounds is ascribed, मतलब कि is a property of, mainly which of these? मतलब किस कारण हो रहा है? Ascribed mainly तो मतलब किस कारण हो रहा है? What is the reason behind catalytic activity? Is it the magnetic behavior, the unfilled d orbitals, ability to adopt variable oxidation states, or the chemical reactivity? अब ये तो भाई हो गया unfair question, because on this first साइड इट में सीम कि यार बी भी सही है, सी भी सही है. अभी तो मैंने बताया अनफिल्ड भी होता है, ये भी होता है, बट ठीक है यार, एनसीईआरटी में ये वाला दिया, तो लेट्स फोकस ऑन दिस. ओके, दिस हैज टू डू विद कॉम्प्लेक्स. ठीक है, लेट्स फोकस एंड से कि चलो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज की वजह से होता है. ठीक है, कौन सा पार्ट आदित्य, कौन सा पार्ट हिंदी में एलैबोरेट करूं, बताओ. आई विल डेफिनेटली डू सो. गुड जॉब दीपान्विता, मयूख, लावण्या, पूनम एंड आराध्या, यू आर ऑल एब्सोल्युटली राइट. आदित्य बताओ यार, क्या बोलूं फिर से मैं, कौन सा वाला पार्ट फिर से बोलूं? ये वाला थियोरी डायरेक्टली एनसीईआरटी से बोल रहा हूं मैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. हम लोग पूरा सेशन जो किए, सर सारा कैसे करूं? सारा तो करने में मुझे 1 घंटा का, फिर ये बनाऊंगा, फिर 1 और घंटे बनाना पड़ेगा. यू टेल मी ना, अगर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं समझ में आ रही बताओ. अभी हम कोई थियोरी तो नया किए नहीं, बट अगर कुछ नहीं समझ में आता टेल मी, और यू पिंग मी ऑन आई टीच केम, आई हेल्प यू आउट ऑन टेलीग्राम. ठीक है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो. ओके, ऑसम. चलो नेक्स्ट वाला आइडिया. मैं तो हिंदी में तो बोल रहा हूँ ज्यादातर, राइट? अभी यू गाइस एबल टू फॉलो मी, राइट? ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट, एम्स 2015 ने बोला. ये रीजन है
V2O5 or PT is used in the preparation of H2SO4 by contact process. है ठीक है, but ये reason कहाँ हुआ? Okay, let me read that again. Session, transition metals are good catalysts. Reason, V2O5 or P2 is used in PT is used in preparation of H2SO4 by contact process. दोनों सही है, right reason, दोनों सही है, reason not really reason. एक सही है, दूसरा गलत है. Assertion सही है, reason गलत है. Option B पक्का मयूख. Okay, मयूख, आराध्या, लावण्या and Sadia are saying B. Aditya bhai, ping me on I Teach Chem on on Telegram or on Discord and I'll try and help you out. But this is the way these sessions go, guys. It's like a little bit of Hindi, a little bit of English, dono mix right now. Okay? Exactly. They are two independent statements. Absolutely right, Mayuk. Pakka B is correct. Yeah. They are independent statements. They're both correct. They're both correct. ठीक है, चलो इस century से that was a 100 slide. I just saw that was a 100 slide. Yeah, that was it for the whole session today. I'll give you these slides as always on Telegram. You check them out. कोई doubt है तो भी पूछ लो. We have like 5-7 minutes to go. So instead of going through a summary, I'll take doubts because I felt Aditya had a doubt or something else. If anybody has a doubt, then please ask me. S block कब होगा? It's a good question, Aradhya. I'm thinking यार, तो हम थोड़ा सोच रहे थे कि अभी एस ब्लॉक तो आएगा उसमें ना 11th में, तो 11th में अभी रेडॉक्स कर रहा हूँ, तो रेडॉक्स के बाद सोच रहे थे कि एस ब्लॉक शुरू करूँ या फिर जीओसी शुरू करूँ, सोच रहे थे अभी. सो लाइक इन 12th व्हाट आई हैव डन इज मैंने पहले थोड़ा ऑर्गेनिक शुरू कर दिया. आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, देन आई डिड हैलो एंड आई एम डूइंग, फिर मेटलर्जी भी किया, ये भी किया, डीएनएस थोड़ा मिक्स एंड मैच कर रहे थे. वी विल फिगर इट आउट यार, जल्दी आपको बताएंगे. मयूख, होमवर्क सवाल इसमें मैंने नहीं दिए हैं बिकॉज इस चैप्टर से कम सवाल आते हैं एंड वी हैव कवर्ड ऑल क्वेश्चंस इन थ्योरी इटसेल्फ. I don't want to burden you with more extra questions, but अगर आप चाहते हो तो एक दो सवाल निकाल सकते हैं क्या? No homework questions in this. Redox में है homework questions, yeah? Okay. नहीं लावण्या, नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ. I have not done it. It must be there on the channel for sure because people have been teaching for a long time. If you want to do live sessions, it will be done soon. Yeah. S block आपको मुश्किल लगता है क्या? S block में तो वो सब है ना, क्या है मतलब S block में सोडियम, अच्छा प्रेपरेशन ऑफ NaCl है और व्हाट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो सब चीजें हैं क्या? वी फाइंड दैट टू बी डिफिकल्ट. सो टेल मी, एक्चुअली इट विल बी गुड टू गेट इनपुट फ्रॉम यू. It'll be good to get input from you. I'm not playing this down or anything. Bye, Zainul. I'm done with the session. Yeah, we're just chatting, just getting your opinions. P block भारी है. I agree, Mayuk. P block में the oxo acids part, right? ये सब मैंने उसका hint दिया था in redox में. थोड़ा बहुत बताया था कि परसल्फाइड होता है, सॉरी परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड होता है या फिर कुछ और होता है. नहीं लावण्य, अभी तक नहीं हुआ है. आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. हाइड्रोकार्बन आई हैव नॉट डन. इट्स ऑन द चैनल फॉर श्योर. बहुत लोगों ने किया होगा. इस साल हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन अभी 11th का नहीं कंप्लीट किया है. वी हैवंट डन लाइव सेशंस. लास्ट ईयर्स के डेफिनेटली होंगे. यू कैन चेक देम आउट. वील डू देम सून. हे शैल, व्हाट्स अप? एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू चैट अबाउट? एनी अदर फीडबैक फॉर द चैनल और फॉर मी? प्लीज बताइए. I have managed to finish the session up a little quick. So F block to hoga. That's the 4th session, Zainul. This is session number 2, right? Session number 4, most likely अगले Tuesday को होगा. We'll do that. Yeah. If you have any feedback for me or for the channel, ping me on Telegram or on Discord on this thing. Yeah, this is my ID there. Let me know what you guys want and we'll try and deliver to our best capacity. Organic का हुआ है लावण्या. 11th का नहीं हुआ है अभी. 11th we have not done these live sessions this year. As always, पुराने तो बहुत वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत ढेर सारे हैं. लाइव ऑफ दिस ईयर वी हैव मोस्टली डन, वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी का ऑर्डर, राइट लावण्या? तो एनसीईआरटी ऑर्डर में वी आर एट रेडॉक्स राइट नाउ, व्हिच इज या ठीक है, कूल. चलो, गुड फन एज ऑलवेज. या इसके बाद कोई सेशन नहीं है, सो हैव अ ग्रेट ट्यूसडे एंड विल रिज्यूम सेशंस टुमारो. हे अरमान, ऑलराइट, चलो बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू अराउंड. या